ये भी खत्म हो गया. Now if I ask you how many solutes were present in the mixture? 4. This is the version which I will give you in the question. इसके पीछे स्टोरी क्या चली है वो मैंने बताई है पहले, कि पहले मिक्सचर ऑफ सोल्यूट्स, वो पहले सॉल्वेंट ऊपर रन किया, उसे सोल्यूट सेपरेट किया, लेकिन जरूरत क्यों पड़ गई दूसरे सॉल्वेंट की, क्योंकि कुछ सोल्यूट्स आपस सेपरेट ही नहीं हुए, फिर आपने उसको 90 पे रेट किया और आपने एक और सॉल्वेंट रन किया, अब वो सेपरेट हो गए हैं. नाउ द टोटल 4 सोल्यूट्स आई हैव. 4. लेट्स से मैं आपसे कुछ एक दो सवाल पूछता हूं. ए बी सी डी, लेट्स से 4 सोल्यूट्स हैं. If I ask you which solute has the greatest RF value in solvent 1, बताएं. A B C D. D. क्योंकि D सबसे ज्यादा ऊपर मूव किया हुआ है, राइट. ये D टेक्निकली पहले यहां था ना, तो सॉल्वेंट 1 ऊपर मूव किया था, तो सॉल्वेंट 1 में D ने बहुत डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर राइट पे मूव किया, राइट. सो बेसिकली द आंसर इज D. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि which solute या solutes were not resolved by solvent 1, B and C. सर जी बच्चा. सर ये रिमूव क्यों किए डॉट्स? क्योंकि वो आगे चले गए ना. जब सॉल्वेंट 1 ऊपर रन किया था तो ये डॉट्स ऊपर आए, फिर हमने एक और सॉल्वेंट रन किया तो ये सोल्यूट्स आगे चले गए ना, तो आगे प्रीवियस डॉट खत्म हो गए क्योंकि वो आगे चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं राइट साइड पे. सही हो गया. और सर ये डी क्यों है पहले का आंसर? क्योंकि बेसिकली जो डी है वो असल में टेक्निकली पहले यहां नहीं था, ये डी पहले यहां नहीं था, और ये बी और सी पहले यहां थे, और ए यहां था, तो इसका मतलब है कि दिस हैज एक्चुअली मूव द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन सॉल्वेंट 1. दिस शुड हैव द ग्रेटेस्ट RF वैल्यू. ओके. सो बेसिकली अगर इफ यू रिमेंबर, जब मैंने पहले बनाया था तो मैंने पहले ये बनाया था, पहले ये सोल्यूट आया था, फिर ये आया था, और फिर ये आया था, ठीक है. फिर मैंने दूसरा सॉल्वेंट रन किया तो फिर ये इनकी सेपरेशन हो गई. डोंट यू थिंक दैट कि ये बेसिकली ए यहां से यहां चला गया, ये जो इतना बड़ा डॉट आया था यहां पे, ये बी और सी में डिस्टिंग्विश हो गया, और ये मूव कर गया आगे. इसका मतलब है ये दो सोल्यूट्स वो सोल्यूट्स थे जो कि सॉल्वेंट 1 ने रिजॉल्व नहीं किए, यानी सॉल्वेंट 1 इनको सेपरेट नहीं कर पाया, राइट. लेकिन आगे सॉल्वेंट 2 ने इनको सेपरेट कर दिया. सो देयरफॉर माय सेकंड पार्ट वाज व्हिच सोल्यूट और सोल्यूट्स वर नॉट रिजॉल्व्ड बाय सॉल्वेंट 1. तो सॉल्वेंट 1 इनको रिजॉल्व नहीं कर पाया, यानी कि इनको सेपरेट नहीं कर पाया. B and C have same RF value in solvent 1 but different RF value in solvent 2. It's a new question, guys. Please see. ये सवाल पास में भी नहीं होगा. Shall I move on? All right, everyone. Your turn now, please. It's your question.
Quick please. ये starting point है x. Quick please. एक्सक्यूज मी सर जी बच्चा. सर हमें सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 के अलग-अलग से बताने हैं या दोनों के अंदर ही जिसने नहीं बिल्कुल मूव किया फॉर द मैं पार्ट सवाल 2 in part 2 which solute did not move at all in solvent 1 यानी part A और ओके फिर part B. एंड ओके दोनों का अलग-अलग आंसर करना है Yeah, yes. ओके All right everyone. चलिए शुरू करते हैं. You can give me a shout. How many solutes were present in the mixture? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Okay. 5. Which solute did not move at all in solvent 1? A. क्योंकि A तो ऊपर गया ही नहीं है, A तो राइट में चला गया. जब solvent 2 यूज हुआ तो ये मूव कर गया, ऊपर तो गया ही नहीं वो. तो it's A. And which did not move at all in solvent 2? E. वो राइट में मूव ही नहीं किया. Which solutes have same RF value in solvent 1? C and D. C and D. Brilliant. Which solute has the greatest RF value in solvent 1? E. And solvent 2? B. B. Brilliant. Guys, Sir? this was experimental techniques. Ji. You're breaking up, my child. I can't hear you properly. Sir, I have a question. Does sir नीचे Ji, please go on. sir x से नीचे a का point है, तो sir नहीं, why नहीं, will we that? X के नीचे नहीं है, X के बिल्कुल इससे पैरेलल पे है. Oh, okay. Yeah. Thank you, sir. So guys, everyone, so this is the experimental techniques and now we start learning about gases. ठीक है? इसके बाद experimental design आ जाना है इस chapter में. सर जी. सर ये न्यू क्वेश्चन है तो ये कंफर्म आएगा ही आएगा. नहीं.
ऐसी बात तो आपने हरगिज नहीं करनी मेरे साथ। न्यू क्वेश्चन Sir, can you please release skin a bit back? I mean every year I make new questions. हर साल नए सवाल लाता हूं मैं, लेकिन हर साल लाजमी नहीं कि वो सवाल आ जाता है। हाँ मतलब कि इन द प्रीवियस कुछ आते रहे, लेकिन मतलब ये नहीं कि मैं कोई आमिल बाबा हूं और कोई सवाल आएगा तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके नाउ एवरीवन गाइस, लेट्स गो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चांद ज्यादा कम है। इट्स अ न्यू क्वेश्चन, आई मीन एंजॉय साइंस, राइट? Okay, so guys, it's gases, everyone. So when I talk about gases, right, in the experimental techniques chapter, so I'm talking about a couple of things. One is the solubility of gases. Second is the nature of gases. Third is the density of gases. And fourth is the collection of gases. So we should know all these things before we move on to the next chapters, because we'll ask you these things. Let's start off with the solubility first. मेरी बातें बहुत गौर सुननी है please, ठीक है? You should know as O-level and IEG CSE students that which gases are soluble and which gases are insoluble, right? You have to learn them by heart. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर जाएं हॉट सीट पे बैठे और हिल हिल के याद करें नाइट्रोजन सॉल्युबल होती है, CO2 सॉल्युबल होती है। ऐसे का करेंगे तो फिर आई थिंक जिंदगी के 14 साल आपने जाया कर दिए राइट गुजार के। ये वो चीज होती है जो कि आप बार बार आई थिंक रिवाइज करते हैं। वैसी कोई आपने चट बना ली और बार बार देखते रहे, अच्छा N2 इनसॉल्युबल होती है, बस रख दिया, बस सोचते रहे वो एक मतलब चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर अगर आप एक दिन लगा के रटा लगा के आप उस रटा लगाएंगे कि जी ये इसके सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, हफ्ते बाद आपको वो बात भूल जानी है। तो अगर बात भूल ही जानी है तो अब टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स। आप कहते हैं बस आज की रात पढ़ के ही उठना है, कुछ तो वैसे ही नहीं पढ़ते, और जो ठान लेते हैं आज पढ़ के ही उठना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो रट्टे पे रट्टे 2 हफ्ते बाद आपसे वो बात पे आपको आती नहीं होती, तो क्या फायदा हुआ करने का? और वैसे भी रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, रात को सोया करें प्लीज फॉर गॉड सेक, राइट? जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा ना आप चैप्टर एनर्जी चेंजेस, तो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट योर ह्यूमन बॉडी के अल्लाह ताला ने आपको बनाया किस तरह, राइट? जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया उस तरह ही रहें। अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे तो इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, वो कानून वही रहेगा। लाइक आई मीन इक्विलिब्रियम जब इंसान ने डिस्टर्ब किया, इंसान ने उसके आफ्टर मैथ्स देखे, राइट? वो चीजें वही की वही नहीं है, तो इसलिए ऐसे मत करें प्लीज, ठीक है? और वक्त भी जाया कम करना जरा जल्द छोड़ दें। ये जो स्नैपचैटिंग और ये फेसबुकिंग और ये इंस्टाग्रामिंग हमारी कौम ही तबाह कर दी इन्होंने। एक ये स्नैपचैटिंग, एक फेसबुकिंग, एक इंस्टाग्रामिंग, उसके बाद ये बर्गर पिज्जा, यार आई मीन हर चीज दिमाग माउफ करती रहती है। ईट हेल्दी, राइट? ईट लेस एंड स्लीप अप टू द रिक्वायर्ड लेवल। आपकी उम्र में आपको 8-9 घंटे सोना चाहिए। अगर आप 8-9 घंटे से कम सोते हैं आप ज्यादती करें अपने साथ, ज्यादा सोते हैं आप ज्यादती करें अपने साथ, ठीक है? ये मत करें प्लीज, मैं सही कह रहा हूं आपको, ये मेरी बात आपको याद आएगी आज 10 साल बाद जाके, ठीक? फिर मुझे मैसेज कीजिएगा आप सही कहते थे। ओके, मैं तो भी कहता हूं if any one of you runs with me in a 100-meter race, I'll beat you, I'm telling you. Open challenge. नहीं अभी तो मेरी सर्जरी हुई है, अभी तो आज नहीं कर सकता मैं, राइट? आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, राइट? तो ये तो हालात हैं। मुझे लगता है हम लोग ज्यादा एक्टिव हैं आप लोगों से। आप लोग तो यू नो लाइक लेजी लेथार्जिक टर्टल्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस गाइस, चलिए मुझे आपने असिस्ट भी करना है साथ साथ प्लीज, ठीक है? माशाल्लाह आपको 3 साल 800 दिन तो हो ही गए हैं वो लेवल के अंदर। नाइट्रोजन
हाँ हाँ Insoluble. कॉन्फिडेंटली बोले इनसॉल्युबल, ये बाकी भी बोले, आप दुनिया में आए गए बेटा, राइट, इनसॉल्युबल। और यहाँ पे कॉमन सेंस ये कहती है अगर नाइट्रोजन इनसॉल्युबल ना होती तो कब की एटमॉस्फेयर का N2 हमारे ओशन में डिसॉल्व कर चुका होता। कॉमन सेंस। अब बताएं ऑक्सीजन क्या? ओके इट्स एक्चुअली इनसॉल्युबल, हाँ, बट वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली डू डिसॉल्व, राइट। मैं आपको इसलिए मैं हर चीज में आपको लॉजिक बताऊंगा हर चीज के पीछे, ताकि आपको याद है, लॉजिक बस कम याद रह जाए आपको। आपको पता है 75% ऑक्सीजन यू इनहेल इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स अंडर वाटर। जितनी आपको वेजिटेशन ऑन द अर्थ दिखती है ना, राइट, इसका 175% इज एक्चुअली अंडर द ओशन। अल्लाह ताला को ये पहले से पता था इंसान ने दरख्त काट देने हैं, उन्होंने जाके ओशन में पैदा कर दी दरख्त, ताकि कम से कम इंसान रह सही कम से कम फॉर एटलीस्ट बिलियन ईयर्स, राइट। तो 75% अगर ऑक्सीजन का अगर आप इनहेल करते हैं जो अंडर वाटर प्लांट से आता है, तो फिर ऑक्सीजन बाहर कैसे आ जाती है? तो पानी में इनसॉल्युबल थी तो बाहर आई, लेकिन फिर भी कुछ ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व कर जाती है, ये बात याद रखिएगा। ये वाटर है, ठीक, वो आपने सुना है कि कुछ वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, कभी ऐसी बातें की? Yes, sir. Fishes भी वैसे respire ये करते हैं। ये जो दानिशमंदाना बातें जो होती हैं कभी की हैं? हाँ हाँ, ये मैंने इसी पॉइंट पे आना बेसिकली। You've raised actually a nice question. This is what I wanted to hear actually. वो जो हम कहते हैं ना वाटर में ऑक्सीजन होती है, खुदा के वास्ते ये वाली ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हम, ये वाली इस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। पता है कौन से ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं? ये है पानी के मॉलिक्यूल्स, ये पानी, ठीक है। अब ये बीच में ना O2 मॉलिक्यूल्स फंसे होते हैं ऐसे, ये हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं कि वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। जब आप पानी को हीट करते हैं और पानी बॉईल करता है तो क्या होता है? These water molecules move far apart and these oxygen molecules they escape. इसलिए बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन गैस नहीं होती। जो वाटर इंस्टेंटली बॉईल हुआ है, राइट, अगर आप उस I mean if you drink boiled water, I mean hot water, let's say for example, जो अभी बॉईल हुआ है, it's unhealthy क्योंकि उस पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। आप उसको कुछ देर रखते हैं, पहले वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, फिर आप वो पानी पीते हैं। इसलिए ज्यादा, आई नो इफ यू हर्ड नॉट, लेकिन साइंस ये कहती है, वैसे दीन भी ये कहता है बाय द वे, इफ यू ड्रिंक वेरी हॉट टी इट्स अनहेल्दी। रीजन इज क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन को अलाउ तो करें डिसॉल्व करें उसके अंदर, पानी के अंदर कम से कम। That's why in chemistry in the metals chapter मैं एक दिन एक वर्ड बोलूंगा, शायद आपने सुना अपने टीचर से, वर्ड boiled water does not contain oxygen. So in general, we'll say that oxygen is insoluble, right? Yeah, generally oxygen is insoluble. Very few particles dissolve in water. और boiled water में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए boiled water में अगर आप नेल रखें, आयरन नेल रखें, तो उसको रस्ट नहीं लगता। आम रखें पानी में तो नेल को रस्ट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है बॉइल्ड वाटर के अंदर। तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट, ये बातें भूलनी नहीं है। आई मीन नो वर्ड आई से इट इज यूजलेस। आगे चलते हैं। CO2 गैस बताएं, पानी में सॉल्युबल क्या इनसॉल्युबल? पार्शली सॉल्युबल। अब सिंस आई एम टीचिंग केमिस्ट्री एज अ होल, तो मुझे कुछ बातें एक्स्ट्रा बतानी है आपको, ठीक है? तो इसलिए प्लीज गेट रेडी। ओके, बता दूं इसको? एवरीवन यस? ओके, okay, now
गाइस एवरीवन इधर सुने, मेरी बातें बहुत गौर सुने प्लीज, ठीक है? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे जो लेक्चर का। अगर कोई भी गैस पानी में डिसॉल्व करेगी, याद रखिएगा वो पानी से रिएक्ट करेगी, और हमने आपसे रिएक्शंस पूछने हैं। तो लेट्स बी क्लियर, whenever CO2 reacts with water, guys, it forms H2CO3, it's carbonic acid, right? And CO2 dissolves, don't forget it please. Sulfur dioxide पता है पानी में dissolve करती है क्या? सुनो तो कुछ मार दें, नहीं Soluble. करती है, soluble है, Soluble. brilliant, हाँ। SO2 plus water, याद रखना, it gives you H2SO3, sulfurous acid। जिस दिन इन रिएक्शंस की बारी आएगी मैं फिर आपको दोबारा कोट भी करूंगा, लेकिन ये रिएक्शंस प्लीज याद रखिएगा, सिलेबस का पार्ट है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाँ बोले बोले बोले, soluble, brilliant। सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करती है पानी से एंड गिव्स यू सल्फ्यूरिक एसिड गाइस। मैग्नीशियम ऑक्साइड Insoluble. आगे लेके अस्तगफिरुल्लाह, हाँ हाँ बता दो क्यों, वो रिएक्ट कर देती है। अस्तगफिरुल्लाह, ये गैस ही नहीं है यार, मैं तो जान के पूछा है। Oh my God, मेटल ऑक्साइड, आयोनिक कंपाउंड पूछ लेगा था मैं। अमोनिया, soluble के insoluble? Soluble. Soluble। Soluble. अमोनिया रिएक्ट करती है पानी से एंड गिव्स यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NO2 soluble। नहीं नहीं भी आएंगी देखिएगा, हाँ वैसे यस यू राइट, Sir, noble gases are insoluble. यस दे इनसॉल्युबल। सॉरी आप क्या कह रही हैं? ओके फाइन, इट्स एक्चुअली गुड कैच राइट। सो व्हेन द स्टूडेंट इज आस्किंग कि मैंने यहाँ पे एक रिवर्सिबल साइन बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ एक रिवर्सिबल साइन, बाय द वे राइट, yes, a chapter will come where you will learn these reversible reactions, right? तो ये reversible reaction है by the way, उस सेंस मैंने बनाया है right, लेकिन of course when one day we learn it you'll come to why I put that sign by the way, okay? So nitrogen dioxide जब ये पानी से रिएक्ट करती है it gives you nitric acid HNO3 plus HNO2, ये आपको दो एसिड देती है, भूलना नहीं है प्लीज, ठीक है? और ये भी याद रखिएगा, ये जो NO2 के बारे में एक बड़ी फेमस ऑब्जर्वेशन भी होती है एक, anyone with an idea? No, it's a brown gas, बड़ी फेमस ब्राउन गैस आपके सिलेबस की, और ये रंग सारे याद रखिए, हमने आपसे पूछना है ये वाले रंग। सिर्फ ब्राउन गैस तो आयोडीन की नहीं थी? नहीं नहीं, एक ब्रोमीन गैस ब्राउन गैस है और एक NO2 ब्राउन गैस है, सिर्फ दो ब्राउन गैसेस हैं आपके सिलेबस में, O लेवल और IGCSE बोथ। Bromine gas and nitrogen dioxide are the only brown gases in your syllabi. Okay. Sir, HNO3 is nitric acid and HNO2 is nitrous acid. Yes. HNO3 is nitric acid and HNO2 is nitrous acid. Okay. Please focus. सर ये ब्राउन भी कलरलेस हो जाता है एल्कीन के साथ के नहीं? नहीं नहीं ये वाला नहीं होता, वो सिर्फ ब्रोमीन का होता है। ओके सर। चलिए जी, अब बताएं NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वाह ब्रिलियंट। कार्बन मोनोऑक्साइड इनसॉल्युबल। क्लोरीन Soluble. सॉल्युबल। अगर क्लोरीन डिसॉल्व ना करती तो फिर हम उसको पानी में क्यों डालते? स्विमिंग पूल में डालते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और पता है क्लोरीन जब पानी में डालते हैं तो इट गिव्स यू HCl plus HClO, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है बाय द वे। It gives you hydrochloric acid plus hypochlorous acid, HCl plus HClO। तो यहाँ पे स्विमिंग कौन कौन करता है? Anyone who swims? फिर मैं
ओके गुड Very ब्रिलियंट. जब आप स्विमिंग पूल में छलांग मारते हैं तो जाहिर सी बात है आप डाइव करते होंगे ना, ऐसे छलांग मार देते होंगे, राइट? इट्स डेंजरस क्योंकि वो रिब केज पे आके हिट करता है क्योंकि पानी में कैपेसिटी होती है. फिर आपने ये भी देखा होगा स्विमिंग पूल में क्लोरीन वाटर होता है, राइट? तो बेसिकली जब आप फ्रेश क्लोरीन डालते हैं तो जो स्विमिंग करते हैं उनको आइडिया होगा कि वो समटाइम्स वो जाके गले को भी हिट करती है और समटाइम्स टॉन्सिल्स जो है कभी-कभी स्वेल भी हो जाते हैं, आंखें भी लाल हो जाती हैं. वो जो आंखें लाल होती है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती हैं. अगर क्लोरीन एक्स्ट्रा डाल दें अंदर, जंप तो हम मार लेंगे, तो बाहर नहीं आएंगे बस, क्योंकि अंदर एसिड इतना ज्यादा हो जाएगा इट बिकम्स अ किलर. ये जो टीयर गैस होती है, टीयर गैस, राइट, ये होते हैं फेनेसाइल क्लोराइड्स. और देखा होगा आपने एक वो शेल्स फेंकते हैं उस फेनेसाइल क्लोराइड के, राइट, तो टीयर गैस निकलती है. वो जो टीयर गैस होती है बेसिकली वो भी रिएक्ट करती है विद वाटर इन योर आईज, और जब वो रिएक्ट करती है आपकी आंखों के पानी से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है. वो HCl बहुत ज्यादा इचनेस क्रिएट करता है. अल्लाह ना करे कभी आप ये फीलिंग एक्सपीरियंस करें, लेकिन इट्स वेरी बैड फीलिंग, राइट? यू कांट रियली टॉलरेट. और अगर ये एक्सेस हो जाए तो इट मे बी डेडली, क्योंकि वो हिट करेगी कॉर्निया को, राइट, और फिर कॉर्निया डैमेज कर देगी. सो आई मीन क्लोरीन reacts with water, gives you hydrochloric plus hypochlorous acid. Don't forget this solubility of gases, please, everyone. Moving on. And now, the nature of gases. It means acidic gas hai, basic gas hai, या neutral gas. So, carbon dioxide. अच्छा एक सेकंड एक ऊपर प्लीज लिख लें. नोबल गैसेस सारी इनसॉल्युबल होती हैं. नोबल गैसेस सारी इनसॉल्युबल हैं. वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, they all are insoluble gases. So should Change. we memorize these reactions? Yes, these reactions are very much a part of your syllabus. CO2, guys, is an acidic gas. Acidic. SO2 acidic. SO3 acidic. चलो मैंने बता दिया, आप कुछ आप बता दें. Sir, NO2 क्या O2 होगी? is neutral. NO2 acidic. Great. Ammonia क्या होती है? Ammonia. Basic. हाँ, the only basic Basic. gas found in nature. Basic, yes. अच्छा, आप बताएं ऑक्सीजन क्या है? Neutral. 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 Brilliant. Nitrogen? Neutral. 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 No effect on it. It's neutral. Or noble gases be neutral. Sir, methane is neutral as well. Yes, yes. CH4 जो आपका मीथेन है बेसिकली, alkanes वो भी neutral होते हैं. CO, it's carbon monoxide. Acidic. Neutral. Neutral. CO2 is acidic लेकिन CO is neutral. NO, Well, that's अब याद रखना है जो NO2 है, NO2 acidic है लेकिन NO is neutral. Sir, what makes a substance acidic? Oh, it's a very good question, by the way. The question is that which makes a substance acidic or neutral or basic, maybe, right? Lekin I think it's not the right time to answer. When acids, bases, salts chapter will come up, I'll tell you that what is that nature which makes it acidic, basic, and neutral, right? Sir, is Uh, SO3 2 yeah. acidic? Sorry, please come again. Sir, Online. is SO3 2 acidic? Yes, absolutely. SO3 is much more acidic than SO2. You're right. Yes, please. आगे चलें. And now the density of gases. Please stay focused.
सर ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? Experimental techniques. Now guys, everyone please shh, silent. Now density of gases. देखिए हमारी केमिस्ट्री में कुछ gases less dense हैं, कुछ more dense, लेकिन what is with which substance we compare? तो it's air. और हम air को normally oxygen लेते हैं, right? So air is taken as oxygen. हालांकि बहुत ही, I mean, it's a very bad example, but still, it's a normal conception if you take. So air is oxygen. Oxygen का molecular mass is 32 grams. क्योंकि oxygen 16 होता है, तो 16 plus 16 is 32. तो हम air से compare करेंगे कि gas less dense है कि more dense है. अब I mean oxygen हम लेंगे एयर को बेसिकली. अब जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन का मास इज 32 ग्राम्स, तो जिस गैस का मास 32 ग्राम से लेस होगा तो वो लेस डेंस गैस होगी, राइट? सो गैस with mass less than 32 grams is a less dense gas. And automatically, gas with mass more than 32 grams is a more dense gas. So, sir, does the more dense gas tend to sink? Yes, absolutely. Maybe आ रहा इस वाले point पे. Sir, जी बच्चा. sir, how is mass and density like linkable? Because like a thing could have less mass and be more dense at the same time. No. क्योंकि जो डेंसिटी क्या होती है, mass और volume in physics, yeah? Density is mass or volume. इसका मतलब क्या है? Density is directly proportional to mass. More the mass, more dense the substance is. Okay. Now, everyone, please. So basically, आप उनके molecular masses निकालेंगे. Let's say, for example, अगर मैं कहता हूँ CH4 gas, it's a methane gas, by the way, right? CH4. अब जो carbon का mass 12 होता है और hydrogen 1 होता है, तो इसका molecular mass will be 12 plus 4, 16, right? So I think that अगर इसका molecular mass कम है, तो ये less dense है, and less dense gas will tend to rise, right? So it will tend to rise, right? So basically, less dense gas will tend to rise, and more dense gas will tend to sink. Similarly, let's say मैं कहता हूँ chlorine gas. अब chlorine का atomic mass is 35.5, तो इसका molecular mass will be 71, so it will tend to sink. So basically, less dense gas will tend to rise, and more dense gas will sink. Please, like for example, helium. अब इसका atomic mass is 4, it will tend to rise. CO2, इसका molecular mass is 44 grams, it will tend to sink. अच्छा, मैं एक चीज जरा और भी थोड़ी बता दूं, क्योंकि आप बहुत इसको लिटरली ले लेते हैं, लिटरली. तो मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा प्लीज, ठीक है? सुन लें. ये जो हम बातें करते हैं ना, मोर डेंस गैस, लेस डेंस गैस, आप हमारे इंग्लिश पे गौर करें ना, इंग्लिश पे. मोर डेंस गैस, मोर डेंस. तो आई एम एक्चुअली कंपेयरिंग इट. इट्स रिलेटिव. मोर, इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री, राइट? तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस चीज से. एब्सोल्यूट नहीं है. स्टूडेंट समझते हैं कि जो हैवी गैस होती है, बस वो ऊपर जा ही नहीं सकती. गलत मतलब है. इसके फिर इसका मतलब हुआ, मेरी ड्राइंग बड़ी पैथेटिक है,
ये बुर्ज खलीफा है, ठीक है, पता नहीं मैंने क्या बनाया है, लेकिन फिर भी चलें। केक है ये तो। यानी कि अगर बंदा ये बुर्ज खलीफा पे खड़ा हो यहाँ पे, तो आप कहते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं होगी, वो तो हैवी होती है। फिर आप कहेंगे यहाँ तो CO2 गैस ही नहीं होगी। 124th फ्लोर पे there's no CO2 गैस, तो ये मतलब हुआ। इन अगर मैं सी लेवल पे आ जाऊं तो हीलियम गैस वहां नहीं हो सकती, वो आसमानों पे ही होगी, तो ये मतलब हुआ ना आपका। तो प्लीज लिटरल मीनिंग मत लें कि हैवी गैस विल टेंड टू फॉल एंड लाइट गैस विल टेंड टू राइज। बात ठीक है, लेकिन इट्स ऑलवेज अ कंपैरिजन गोइंग ऑन। यानी कि अगर मैं एक हैवी और एक लाइट गैस ले लूं तो लाइटर गैस और ऊपर जाएगी, हैवी गैस थोड़ी सी नीचे रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पार्टिकल ऊपर हो नहीं सकते, हो सकते हैं भाई, लेकिन ज्यादा पार्टिकल नीचे होंगे। ये मतलब होता है इसका। सॉरी, या नाउ once you know what is density of gas, जी please. Can you please add the students in waiting room? Okay, just a moment. All added. Relative oxygen, yeah. Now guys, everyone, So can you once scroll know- up a bit? यहाँ पे, यहाँ इससे भी ऊपर। Sir, बस सही है. Thank you. Okay. So, जी, said that density is equal to mass over volume, but then we are discussing the MR and the AR value of the gases. mass is MR actually. So don't we take volume into account in electrochemistry? It doesn't matter that much. Mass has a dominant effect. So now guys, once we know the solubility of gas, the density of gas, the nature of gas, right? And now we start learning the collection of gases. Shall I move on? Okay, everyone, it's collection of gases now. Shri Salin. There are technically 4 ways to collect gases. Upward delivery, So sir, how will we know if a gas is acidic or basic? कि बस याद कर लें जो आपने कहा है. you'll have to learn. You'll have to learn. So it's upward delivery or with downward delivery. Then it's collection over water. And fourth is using gas syringe. Okay. सर अपवर्ड और डाउनवर्ड डिलीवरी में हम गैस रेंज इस्तेमाल करेंगे. नहीं, अभी इसको डिस्टिंग्विश करूंगा. अभी you'll see that. Everyone, let's see the upward delivery first. Upward delivery is used as a method to collect less dense gases which tend to rise. For example, helium or hydrogen, etc. Etc. नहीं होता, ठीक है? Etc. Let's say for example, ये एक सप्लाई आ रही है हाइड्रोजन गैस की, ये डिलीवरी ट्यूब है, हम इसके ऊपर एक इन्वर्टेड गैस जार रख देंगे, right? Let's for example, this is hydrogen
तो हाइड्रोजन जो है इस गैस जार में कलेक्ट होना शुरू हो जाए। मैं सिंपल एज दैट। लेकिन जाहिर सी बात है, यूज कॉमन सेंस, हर एक्सपेरिमेंट अर्थ में हो रहा है और अर्थ में एयर है, तो पहले इसके अंदर एयर होगी ना, पहले तो एयर होगी। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में कलेक्ट होने पहले एयर शुड एक्सपल्ज आउट, राइट। तो इसलिए जब यहाँ से एयर यहाँ से बाहर जाएगी ना, एयर यहाँ से बाहर जाएगी तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होना शुरू होगी। तो अपवर्ड डिलीवरी इज आल्सो कॉल्ड एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। लेकिन मुझे एक बात बताएंगे यहाँ पे, सर अगर गैस ट्रांसपेरेंट होगी तो हम कैसे देखेंगे? हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पता कैसे चलेगा कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस यू कलेक्टेड? मुश्किल है ना, पता कर नहीं सकते आप। और मेरे ख्याल से सिंस वो स्पेसेस भी ओपन है, अगर स्पेस ओपन नहीं करेंगे तो गैस जाएगी नहीं अंदर, क्योंकि एयर ने भी तो एक्सपेल आउट होना है, राइट। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई इतना सूटेबल मेथड नहीं है गैस कलेक्ट करने का, राइट। क्योंकि आई थिंक गैस थोड़ी एक्सपेल भी करेगी ना, आप वॉल्यूम कर सकते हैं फाइंड कितना आपने गैस कलेक्ट की है, बट स्टिल इट्स अ मेथड and we should know it. But how to improve it, of course, we'll come to know soon. Similarly, we have downward delivery. So it is used to collect more dense gas. For example, carbon dioxide, chlorine, etc. So basically, let's say for example, ये गैस सप्लाई आ रही है और ये गैस जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इससे पहले एयर होगी तो एयर पहले एक्सपेल आउट करेगी तो गैस कलेक्ट होगी इसके अंदर। तो एयर शुड मूव आउट फ्रॉम हियर, फिर गैस कलेक्ट होगी ना। दैट्स व्हाई डाउनवर्ड डिलीवरी इज आल्सो कॉल्ड एज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि एयर ऊपर से डिस्प्लेस कर रही है। लेकिन आई थिंक अगेन ये कोई इतना सूटेबल मेथड नहीं है कि आप गैस की मेजर भी कर सकें। हाँ अलबत्ता अगर कलेक्शन चल रही है और एक रैंडम क्वेश्चन आ गया तो यू कैन गो विद द आंसर। और सबसे बेस्ट वे इज गैस रेंज, व्हिच विल टॉक ऑफ कोर्स टॉक लेटर। आप बताएं पहले यहां तक कोई बात अनक्लियर? एनीथिंग अनक्लियर एट द मोमेंट? So can we call it upward displacement of air as well? Yes, absolutely. Downward delivery of gas is also called as upward displacement of air method. सर ये डेसिमल या फ्रैक्शन से बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन? Yes, you can. ओ लेवल में भी? Yep, absolutely. सर अगर स्कूल के टीचर मना करते हैं, कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई करो, No comments. I'm telling you, as per the Cambridge examinations, right, are concerned, आप चाहे values इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, we'll take them both if they're correct. आप चाहे इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करें डेसिमल में या फ्रैक्शन में, as far as it is correct, it's correct. जब वो लाइनें दी होती लेकिन हैं, टीचर जी बोलें। सर वो अगर डेसिमल्स के अंदर लिख दें तो वो टीचर मार्क्स काट लेता है दफा मेरे टेस्ट के अंदर। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन आई मीन अगर टीचर मार्क काट ले तो आई मीन ही इज अ टीचर, ही कैन डू इट। अरे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो डेसिमल्स में आ जाता है, तो वो फिर होल नंबर में क्यों करते हैं? वो होल नंबर करते हैं हाँ उसको। लेकिन अगर आप सीआई में लिखेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल एंड अगर मुझसे आप वहां पूछे वहां मार्क काटेंगे, हम मार्क नहीं काटेंगे, विल गिव द मार्क।
विल रिवॉर्ड यू। और अगर यहाँ पे लाइने में आप आंसर लिख रहे हैं लिखते लिखते आमद आपको ही जाती है, हो ही जा रही है आमद, यहाँ पे अगर यहाँ लिख दिया आपने, if you think that we will not check it, it's wrong, we will check it, right, we will check it. ये कुछ myths हैं, ठीक है, कि इस तरह हो तो इस तरह हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। I'm telling you as an official examiner of Cambridge। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं मुझसे कि सर ये पेपर वाकई जाते हैं बाहर चेक होने के लिए या यहाँ पर इधर चेक होते हैं? ये सवाल है आप लोगों का, किसी का है सवाल? Okay, the answer is they do go abroad. Yes, right? स्कैन होके जाते हैं जी। Yep. Sometimes, you know, in some instances, I mean, जो like अगर स्कैनिंग ठीक नहीं हुई या एग्जामिनर्स कह रहे हैं कि we want the actual paper, तो पेपर यहाँ से शिप भी होते हैं बाद। Yep. तो इसलिए my last word for today, ये क्या है? ओहो, क्या कहते हैं इसको? Intestine. It is not small intestine, खुदा के वास्ते, it is intestine. Thank you very much, take care And happy learning. Happy learning everyone, keep smiling। सर ये मुझे आप एक बार बताएंगे 0.00523 आपने यहाँ पे क्यों लिखा है?